Hello everyone, welcome to C2C Mentors. So, as all of you know, my name is Shanky, and I had been a faculty at C2C Mentors since last couple of years. So, today's video will be on discussion of 6 month preparation plan for LRDI. I will be covering what is LRDI, why is it important, what is the course structure for LRDI, LRDI ka past analysis, what is the study plan and strategy for LRDI. Is 99% really possible or is it a myth? Okay, is it a myth for new students who are trying to achieve the objective now from now? So, and why you should join C2C mentors to cover all these questions that all will be covered. Logical reasoning and data interpretation. Definitely, this is the full form of LRDI. So, what happens is basically there are multiple aptitude exams that occur in the country for the admission of an MBA process. Okay, if they are occurring, so the exams can be divided into the form of CAT. Level of difficulty varies across all exams. I'm sorry, this point has been covered twice today in the video, so just ignore this point. Level of difficulty varies across all exam. What does this mean? So level of difficulty means that in some paper the question for quants or the question for LRDA can be a bit easy one, which can be solved approximately in less than a minute for the exams like SNAP and NMAT. And in some paper like CAT and ZAT, the LRDI part is little difficult. LRDI part is little difficult as compared to SNAP and MAT because the entire set that needs to be solved takes around 10 to 12 minutes ka duration. 10 to 12 minutes ka duration to get solved. Four questions are there, so approximately your per question time increases. In SNAP, your per question time in LRDI is less than a minute or equal to 1 minute, but in CAT, your per question time increases to 2.5 times. So which directly signifies that the level of difficulty of this exam is more than this particular exam. Okay, make or break section for all. Why it is a make or break section? I think like this make or break section for all because first, the kind of exam that you are focusing on is CAT. I'm assuming you have to give English or verbal in the first slot. Okay, in the first slot you have to choose. You can't choose basically in CAT. The order will be English, LRDA, and quants. So many people are comfortable with this order and they try to go with this order in all the exams. Okay, so English is the first one, LRDA is the second one, and quants is the third one in CAT exam. If you perform well here, definitely your confidence will be boosted up and you will try to jump here with the flying colors and you will try to make things or make your life easier for this particular section. But if you try to dug out here or if you fall here, then definitely if this section is easy also, you will screw this section. So I think that this is a make or a break section for all. Okay, you do well here, you will try to do well here also because of the confidence that you have gained over the past two sections. You fell out here, you are not able to solve out a single set, your mind will be like in the quant section that what is the purpose to solve quants now because I've already screwed my LRDI. So don't let these kind of thoughts win over the thoughts that the mat quants marks won't matter. It matters, and that is not the scope of the video to be discussed today. So this is it, that what is LRD and why is it important. I hope the concept is clear to each and every one of you. So now I'll move to the next page. What is it saying? Let's just look at it. What is the course structure? Okay, so everyone tries to look at different things like what is the course structure. I don't have any kind of a course structure, but there is no kind of a course structure that is given from IIM's perspective also. These are the kind of the questions which everyone or majority of the coaching institutes have collated over the last couple of years to judge the level of the LRDI or to judge the kind of questions that come in the exams. Set theory, very popular very popular topic, has been into existence, and a continuous question comes from this particular topic in LRDS since 2017. 17, 18, 19, 20 it was there. 21 it missed, 22, 23 again it was there, if I am not wrong. Okay, I'm not sure about this 23 one, but 22 definitely it was there. So it is a very popular topic, highly testable in the last particular past years. So we kind of
have advantage over set theory. We try to solve set theory for at least 5-6 weeks, which approximately in the class for 2 hours is 14-16 hours. So 14-16 hours we try to do ample amount of sets to have a confidence on this particular topic, because I think this is a very challenging topic for people who are just well versed with 3 set kind of a diagram. जिनको 3 सेट का डायग्राम आता है, जिनको 3 सेट का आता है उनको लगता है उनको सेट थ्योरी आता है, बट कहानी शुरू ही 4 सेट 5 सेट से होती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द nitty-gritties ऑफ दिस टॉपिक एंड लर्न अकॉर्डिंगली. Arrangements. So arrangements can be further divided into linear, complex, circular, etc. So linear is basically you are just standing with your 5 friends and you are facing towards the sun, and you have to arrange yourself in such a order that the following conditions are met. In the circular arrangement, you sit like this. 5 friends are sitting on the table, and everyone has to sit in a particular manner according to the set of conditions. This topic has also been an highly testable material for the CAT exam since last couple of years. So complex is the mixture of linear as well as this circular topic, and this is it about the arrangements topic. Okay, selections. So sometimes you have to form a team. Sometimes you have to form a team, like form a team of 10 people, and from a team of 10 from a crowd of 10 people you have to make a team of 6 people, and there are certain conditions given that if this is chosen this won't be chosen, this is chosen this won't be chosen. So couple of conditions will be given to you, and accordingly you have to make the progress in the question to deliver the to deliver the answer of this particular topic. Games and tournaments. So I genuinely advise everyone to know the basics of each games and basics of each game, and tournament is a separate thing that I'll cover later. But for the games, chess, hockey, football, cricket, etc., basketball, everyone should be aware about the basic terminologies like chess. What is a pawn? What does the knight do? How, in which direction he moves? Because usually the kind of question that comes, they don't try to tickle with the rules of the game. They try to keep it same, and the kind of goals against goals scored for goals for scored against the total goals calculation. This is the kind of the stuff that comes in games. And in the tournaments, there are tournaments like suppose 108 people are fighting. In the 108 people, after the first match, the first one is fighting with 108, second one is fighting with 107, and 63 one is fighting with 64. Oh, sorry, 65. Assuming this, okay. So in this particular 63 will be fighting with then whom? So the total we consider 109 minus 63 will be nothing but 66 or 46. Okay, so that's what I was trying to tell you, that key in this you have to take out the examples, like entire selection of people will be there. They will break down into certain parts, then again they'll break down into certain parts, and then again they'll break down into certain parts. You have to tell who will be the winner of the game if the following conditions are satisfied. Again, a conditional based. Truth and lie, easy topic, might be testable for the exams like NMAT SNAP, but CAT it is rarely asked. But just to know the basics, there is a certain criteria to solve this truth and lie kind of set. So truth and lie can be solved by assumptions, and that will teach you definitely in the class when you will attend. Okay, numbers and binary logic. So sometimes the question comes like 5 of the magic square is there, and you have to fill the places in such a manner that the total of this particular line, and this matches, and the kind of multiplication that you are doing. So conditions set again will be there. So LRDI, as far LR, this comprises of LR. LR, as I'm telling you, it is a conditional based thing. Okay, conditional. Everything will be dependent on the type of conditions that you will get in the question. Okay, everything will be dependent on the type of questions that you will be having into the question. In the DI charts, so what did I do to kind of make a good attempt over LR? That also I'll tell you. First, let's discuss that only. Let me just clear the screen for you one. So basics to start, I think I'll take it in the next page. I have something for you, strategy and stuff, where I'll figure out this thing. DI charts. How do you define chart? Chart is a pictorial kind of a representation which will give me some kind of information through pictorial, like sales of a company in 2017, 2018, and it is showing me 10 and it is showing me 5 and 10, 5 and 10. So this is kind of a graph thing, but obviously it won't come this easy. You have to interpret couple of things from the graph, and you will be able to solve these questions.
clocks and calendars and miscellaneous, whatever is not covered above can be also tested in the exam, because LRDI, as specified by the CAT Institute, there is no fixed syllabus for quants, LRDI and verbal. So these are the, why do we consider these topics as important? Because since we have been taking the exams, prepared students for the last couple of years for these particular exams, so we know kind of the thing that can be testable in the material. Everything is based on assumption. No one can guarantee you that this will definitely be present in the exam. Okay, this is what there had been in the exam, so we are building our assumption that everything will be similar to this or not difficult than this. If it comes this, no coaching institute is going to take the blame on themselves that we kind of didn't prepare you on a on purpose basis, or we kind of knew and we didn't prepare you. No one knew. They are all going on assumption. Even we are going on assumptions. So please take that into consideration. Miscellaneous, whatever is not covered above will be the part of miscellaneous. Clocks and calendars, again, it is some kind of related to quants as well, and it is some kind of similar to LRDI as well. But the kind of in the CAT exams, I have not seen these kind of questions for LRDI, for clocks and calendars. Okay, the time difference might come, like if a plane is flying from India to US, the kind of time it takes, suppose 16 hours it take from here to here, so the time here will be different, here will be different. So how you will kind of tackle that particular set, that is something that needs to be taken care of. But directly clocks and calendars, nothing is usually asked. Okay, but remember one thing, nothing is permanent. Okay, nothing is permanent means if it had not been asked, it does not mean that it won't be asked. It can be asked. Okay, just remember that one thing. So now I'll jump to the next page. I have done the past analysis for you guys, that what is LRDI. So in this particular years, why I have taken the base years for this, because from 2020 the pattern of LRDI had changed. Earlier it used to be a 1 hour exam. Okay, the slots were divided into 1 hour, 1 hour, 1 hour, 3 hour paper was it there, and 2 slots were there in the entire day. Now post 2020 the things have changed to 2 hour exam, and the time duration will be 40, 40 and 40, which is equal to 120 minutes. Similarly, 40 for LRDI, 40 for quants, and 40 for verbal. Okay, so slot one is there, different slots are there, 3 slots in a day that occur. Okay, on an average basis, what I have kind of collated is the questions you need correct. You need the score. So score is like +3 -1, +3 for all the kind of questions that you got correct, -1 for all the negative questions that you get. So there are some kind of theta questions also in the picture. What is theta? Type in the answer. Type in the answer means that you will be given a question like what was Rajesh score in round number 4. So you have to just type from value something 0, say 100 or 200. You will type the answer. If your answer is correct, you will get +3. If your answer is wrong, no marks will be deducted for the same. So you can take your chances in theta. Remember that thing. Okay. So from the past analysis, what I have got to know that if we move forward, the kind of graph that it has followed is basically like if this is the graph, and if this is 2020, 21, 22, 23, so it was here somewhere and then it kind of jumped to here. So LRDI has been a prominent section since last couple of years, and a dip was also seen. Similar levels to 2022 were depicted in the levels of 2023. In fact, I will say it was some kind of on the verge of difficult level, because the 95 to 99 wala range has dipped by 4 marks. Okay, so earlier who was getting 19 marks in LRDI was touching 90 percentile, but who got 19 marks in 2023 was kind of getting 95 percentile. 95 percentile. This is percentile, guys. This is not percent. Everyone needs to understand the difference between percentile and percent. So percentile is basically out of 100 people, if I am getting the top marks, I am at the 100 percentile. But what is percentage? Out of 100 marks, if I am scoring 12, then it is 12 percentage. Okay, but is 12 the highest marks in the entire country? Then it is 100 percentile. Just remember that thing. Okay, so this slide is kind of a slide that will give you the entire analysis of sections and the kind of score that one can get. So 8 questions correct, because 8 into 3 is 24, you will get 95. Here what? 9 questions correct, you will get 95. Here again 8 questions correct, you will get 95, and here only 6 questions correct, you will get 95. Earlier sets used to be of 6 questions, usse bhi pehle ka time tha to 4 questions, and now it had been standard to 5 questions per set. So one set correct, one full set correct
will fetch you 15 marks, which is nothing but 90 percentile in 2023. And if you did two sets of four questions each, then you will be sitting with 95 percentile. And in that time, six sets were there, so you had a wide variety to choose from. 24 questions आते थे total 4 के time पे. Four questions per set था जब उधर. ठीक है. And if you are aiming to be in the range of 99 plus, so there is a special slide for that. You guys need to wait. So what is this? This you have understood: moderate, moderate, moderate to difficult, moderate to difficult. Many coaching institute give you this particular slide that this you have to focus on. But where does we make the difference? We make the difference in the kind of the last row. Last row is number of sets done in C2C. See, every year we have added approximately 100 sets, approximately 100 sets here. And this was our record where I personally have recorded the sets 100 for people who were just nuance in LRDI, who didn't have much knowledge about LRDI. 100 were the recorded one. In the live classes we covered 500 sets on a weekly basis. If you will say, I used to cover almost 6 से 7 sets on a weekly basis, and 52 weeks were there. So earlier जिन्होंने बहुत पहले से जोड़ लिया था हम लोगों के साथ, 312 सेट ये, 100 सेट यहाँ पे, और उसके बाद मॉक एनालिसिस के अलग सेट्स, मॉक एनालिसिस के अलग सेट्स. एक वीक में बताता हूँ what happened was. Just let me clear the screen for once. So 1 week, assuming 2 classes a week, and we do roughly approx 5 sets per class, so 10 sets. And since there are 52 weeks, so obviously no one will be studying for the 52 weeks. But here is the assumption that comes into the picture, that everyone will study at least 45 weeks. So 44, 50 here, 100 sets were given as recording, and at least 50 sets were covered in the mock analysis time, which is very important for everyone to understand the kind of questions that can come and how to tackle, whether to drop them out, whether to keep them, or whether to just try for the first 3 minutes and then get out of it if the things are not going in the not direction. Okay, so this is what we used to do. We are targeting somewhere close to 650 sets plus in this particular year from June. That's what my assumption is, because already 100 or 150 sets have been already in your bucket in the recorded portion if you will buy the course. Study plan and strategy, the most awaited slide. So what kind of slide I have made is that for freshers and non-working people. So freshers and non-working, assuming that these are the college going students who are in the final year and who have roughly approximately around 6 hours of spare time with them. ठीक है. Many of you will say, सर 6 घंटे किसके पास होता है? नहीं होता तो स्लीप कट करो, अपना नेटफ्लिक्स कम करो और 6 घंटे का टाइम निकालो. ठीक है. So what you need to do is that I have calculated June, July, August, September, October, November. Number of days I have calculated 56, 31. Why November has 29 days? Because on 30th of November you have your exam. That is your D-Day. So if you will do 56 and 61, that will be 117. 117 and 31 will be close to 149, 148. 148 and 30 will be close to 178 minus 1. So you have close to 177 days from here onwards. Why I have kept June? Because I am assuming that you might be watching this video from 5th June. Okay, so that's why I have cut the days. इसमें से 10-12 दिन वैसे ही हटा दो. तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा बीमार होना, तुम्हारी दिवाली, तुम्हारी होली, जो भी है, ठीक है. तो 165 डेज रहेगा यहाँ पे. अब 165 डेज में एटलीस्ट जून से जुलाई में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर एक कंसेप्ट का बेसिक्स खत्म कर देना है. सो आई ड्रॉ द टाइमलाइन अबव. दिस इज योर जून थिंग, दिस इज योर जुलाई थिंग, दिस इज योर अगस्त थिंग, दिस इज योर सितंबर थिंग, दिस इज योर अक्टूबर थिंग, एंड दिस इज योर नवंबर थिंग. ठीक है. सो जून से लेकर अगस्त, जून, this is your 1st June, this is your 31st July. Okay, June से July तक you have to finish all the topics that I have covered in the previous slide. Okay, like जितने भी topic. This is for those people who are not in C2C. For C2C, this is the thing that you need to follow. Just wait, I'm coming to that. So you need to cover topics on set theory. ठीक है, basics. So I have listed down approximately 10 topics, and I am assuming that you have got couple of 56 days. So if you will do 10 sets on a basis, 10 sets तो नहीं होता चलो on a daily basis, but at least 3 sets on a daily basis is not a big deal. 3 sets on a daily basis is not a big deal. Why I am telling you 3 sets, why I have given 2.5 hours is also a very good thing to notice, that 1.5 hour you will at least try 3 sets, which will be like you will solve one set in an approximate time of 20 minutes. If you are not getting the answer, you will take 30 minutes. Okay, 30 will give you this.
in the last 1 hour you'll try to do or learn about the concept. Like you don't know set theory, so you can just go to YouTube, you can search for our video also. Okay, or either the best option is this, but still telling for the people who are not that well off to join the classes, or who just believe that they have the capability to do it on their own. So this is what I'm telling you. 1.5 hour, 3 sets on a daily basis will be your nothing but 168 sets. 168 sets, right? 168 divided by assuming that there were 8 topics, that is 21 sets per topic, which is very good number to target in the month of June and July. Okay, then if you have done this, you will do topic wise test. Topic wise test for the next couple of hours. Here your time is definitely going 2.5 hours. Here your timing is definitely going 2.5 hours. But in the start, if you dug yourself, then definitely here this time will be the more enjoyment time for you guys. So topic wise test should be there. What is topic wise test? So I have done 21 sets on set theory assuming, and I have pretty much now gained confidence on this particular test. And so I will do 2 sets on a daily basis. 2 sets on a daily basis of set theory. Okay, 2 sets on a daily basis of set theory nahi karna hai aapko. So then your week will be divided, that one day you will do set theory, one day you will do arrangements. So three sets per day you can still manage to do. And if you do 3 sets on a topic wise test, so ऐसा नहीं करना कि सिर्फ topic wise test दे दिया है. टॉपिक वाइज टेस्ट को दो, उसको एनालाइज करो कि इज देयर एनीथिंग नोटवर्दी टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और नॉट. तुम्हें कुछ नोट करना है या नहीं करना है, आप उसको देखो एक बार के लिए. अगर आपको लग रहा है यार ये वाली ट्रिक ना मैंने अपने पूरे जितने भी शुरुआत में सेट्स किए थे जून से जुलाई तक उसमें कहीं नहीं आई, तो प्लीज उस चीज को नोट करो एक फ्रेश रजिस्टर के अंदर. दैट विल हेल्प यू इन योर रिविजन टाइम ऑल्सो. सो अगस्त से सितंबर आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर वेल ऑफ वर्ड्स विद योर टॉपिक टेस्ट. And then in the October से November का month comes sectionals. So what is the difference between sectional and topic test? You don't need to consider your timings in here. You just need to solve correct. You just need to check your answers. You just need to see the trick that has been used in the solving a particular case. And then you move to sectional, where you will build your time habit in the month of entire October. Topic test will be continued, but now you will try to time your set from between 10 to 12 minutes. Okay, the kind of pressure will definitely kind of drop your performance. You won't be able to solve the set in a particular time frame. It will be definitely difficult for the new people, but this will increase gradually, and we have sufficient number of days to get it increased, which is number of 60 days we have. Okay, so the FLM is full length mock, so definitely the only target is not LRDA, but it is verbal and quants as well. So we need to take care of all the aspects. So that's why post October 15 until November 15, you guys need to give at least close to 30 mocks on a daily basis, do an analysis, or you can start from October 1 if you are pretty much done here. Okay, so FLM analysis. Okay, so working people, you guys also need to do 1.5 hour, but you guys need to do 2 sets here. Okay, and do 30 minutes of preparation of a new topic. These are those working people who are not kind of enrolled in C2C mentors. So 30 minutes for topic preparation, like set theory ke basics pad liye, what is set theory, try to gauge all kind of information that you want in the 30 minutes, and do 2 sets on a daily basis. What is your kind of calculation will work is 56 into 2 will be 112 sets here. Assuming that you continue your 2 sets wala journey for this 61 days, again you will be close to 122 sets. Now sectional and FRM, assuming you give almost 15 sectional. So 15 sectional will have 4 sets. So 60 sets here. You guys also give 15 sectional on a monthly basis. So 615 into 4. Why 4? Because 4 are the number of sets. So 60 sets here. 60 sets. So if you can do the total by not joining C2C, it is not a kind of a marketing video to just force you people to join C2C, but this is the kind of a approach telling you people that things are possible without coaching as well, if you have the clear intention in mind. Okay, but definitely this will always win. Why? I'll tell you in a certain time. This is the kind of video 60 and 120. 60 and 160 will be close to 240, and 240 and 100 will be close to 350 sets. 350 sets is the student capability to do it on his own. But where we make the difference is that 600 sets we do in the class, analysis, recorded portion, everything. Okay, so why C2C mentors is not the question. C2C mentors, you will be guided in a particular manner. We have covered this particular thing, that what topic will be discussed when, what kind of a topic test you will be getting, what kind of a support you will be getting. Like, I don't
want to rush in my videos, but I try to kind of do all the things. Basics as in, अगर मेरी क्लास में 8वीं क्लास का बच्चा भी आ गया ना कैट की प्रिपरेशन करने के लिए, आई मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड थिंग्स. The concept is not to take money and forget about it, but the concept is to take money and deliver the outcome of it. Okay, so basics is the one thing that we usually focus on. मैंने बहुत गालियां सुनी अपनी बेसिक्स की वीडियो में. बच्चे बोलते हैं सर मैं एक फ्रेशर नहीं हूँ, मुझे आती हैं चीजें, मैं एग्जाम दे चुका हूँ. बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार देखो, अगर आपको लगता है आपको आता है, बहुत सारी चीजें होती है, पता है उस वीडियो में भी जो बच्चों को नहीं आती है बट उनको लगता है उनको आती है, तो अगर आपको आता है प्लीज स्किप दिस लेक्चर. बिकॉज मैं उनके साथ जाती नहीं कर सकता जो इस मोटिवेशन से आए कि सर हमारी 60% थी, हमें 91 95 पे जाना है. मैं इनके लिए काम करता हूँ, मेरा यही मोटिव है लाइफ का. मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं 99 प्लस सबको लाके दे दूंगा. मेरा मोटिव है कि मैं 60% वाले को कैसे गाइड करके एक पर्टिकुलर स्टेज पर ले जाऊं. दिस इज आवर फिलोसॉफी एंड दिस इज इन माई ब्लड, एज सिंपल एज दैट. तो मैं बेसिक्स पे बहुत टाइम लगाता हूँ. एक बार बच्चे को बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद वो कितने भी टॉपिक टेस्ट उठा ले, कितने भी सेक्शनल टेस्ट उठा ले, कितने भी फुल लेंथ मॉक उठा ले, वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा. एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन दीज एंड दीज. So everything you have to manage on your own. Here the management will be taken care by faculty like me, and I'll guide you in a proper direction wherever you are facing difficulty. I never kind of, in my class also you can ask from past people. If you are our old student or someone who is watching the video now, you can also comment that I've never tried to skip a question in the class. I usually take time. मेरे को बहुत सुनना पड़ता है कि सर आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट क्वेश्चंस के बिना कैसे आगे बढ़ जाएं. जब किसी को समझा नहीं है कोई चीज तो उसे समझाएंगे ना उसको वो चीज, अदरवाइज फिर उसकी फीस वापस कर दो. दैट इज द थिंग. ठीक है, तो डिलीवरेबल वैसे ही रहेंगे, चीजें वैसे ही चलेगी. स्लो हो सकती है शुरुआत में, बट जब पेस पकड़ती है तो इतना अच्छा पेस पकड़ेगी दैट यू गाइज ऑल्सो विल बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटेजी दैट आई वांट टू गिव यू. Now the real question comes, is 99 percentile really possible from June? 180 days, sir. June. Forget about all this. 99 percentile is the game of hard work and luck. Hard work and luck. Okay. Why or why not is it possible from June, and why is it possible if it is? So I'll tell you that what's in your hands. This is in your hands. Is this in your hand? No. Some person who had solved 100 sets might also be able to get this. Might also be able to get this. But what will be the percentage of that you want to give him? That he has done 40 this and this was this. अल्टीमेटली 100% आउटकम को अगर आप 99 से कंपेयर करोगे ना, तो इट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ दीज टू थिंग्स ओनली. आइदर इट विल बी हार्ड वर्क और इट विल बी लक. समटाइम्स दिस इज दिस एंड समटाइम्स दिस गोज इन नेगेटिव एंड द स्टूडेंट इज एबल टू स्कोर 79 ऑल्सो. उसको हर मॉक में 99 प्लस आ रहा था, बट उसका लक उस दिन साथ नहीं दिया, उसका कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया, या फिर वो अपना कैलिबर ही नहीं संभाल पाया कि इंग्लिश सेक्शन इतना डिफिकल्ट आ गया कि एलआरडीए करने का ही मन नहीं किया. दिस ऑल्सो इज अ वेरी बिग पिटफॉल फॉर एवरीवन एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड हार्ड वर्क इज नॉट द सॉल्यूशन. इससे बेटर है स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क करो, चूज करो, स्ट्रेटेजाइज करो, कौन सा क्वेश्चन करोगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन स्क्रीन पे अपीयर हुआ शुरू कर दिए पेन पेपर लेके. अरे नहीं भाई नहीं, पहले 2-3 मिनट एग्जाम को अच्छे से देखो. क्या है, कौन कौन से सेट है, मेरा फोर्टे एरिया वाला कोई सेट है, उससे स्टार्ट करूंगा, फिर इससे जाऊंगा, फिर इससे जाऊंगा, फिर इससे जाऊंगा. रूट्स बनाओ, अलग अलग प्रिपरेशन करो, बट डोंट वरी, दिस ऑल विल बी कवर्ड. Why is 99 percentile possible from June for students like me? See, I am from a commerce background. Okay, I am from a commerce background and I have nothing done different what I am telling you here. Okay, concept learning, very important thing to focus on. Concept learning is basically learning all the kind of different basics of sets that I have mentioned 2 slides back. Set theory का basics पूरा अच्छे से cover कर देना. मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे, यू शुड नो इट. एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कोई फॉर्मूला पूछे, यू शुड नो इट. 4 सेट का वेन डायग्राम पूछे कोई, यू शुड नो इट. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ सेट दैट यू, दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड टू go ahead. What is formula and tricks? So sometimes how my class works, that also I tell you that in my class whenever you will enter, you will get a module of 5 sets earlier than the class. Okay, I think if my class starts at 10 in the night or 9:30 in the night, you will get a PDF at 9 in your group, and post that we'll start the discussion at 9:30. I'll give you 10 minutes
every time from the start only. I'll make you prepare from the time perspective also. 10 मिनट्स हैं, जितना सॉल्व कर पा रहे हो करो, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर 20 मिनट लगा के मैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करता हूँ। तो 30 मिनट्स में हमारा एक सेट बनता है। 2 घंटे की क्लास में हम 4 सेट कवर करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि सेट इजी आ जाता है तो वो 15 मिनट के अंदर हो जाता है, तो उस टाइम पे 5-6 सेट भी हो जाते हैं। बट हाँ, 4 इज द बेयर मिनिमम दैट आई कवर इन अ 2 आवर क्लास। ठीक है। फॉर्मूले एंड ट्रिक्स, दिस इज द मेजर फोकस ऑन। हर क्वेश्चन को पढ़ के उसकी राम कथा नहीं लिखनी होती है। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तुम्हारी लर्निंग होनी चाहिए, और वही लर्निंग तुम्हारी मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट में जानी चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क विच विल बी हार्ड वर्क। ओके, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन थिंग। वाई प्रैक्टिस क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन मेक्स यू एडजस्टेबल। अगर मैं, यार तुम्हें ना एक बुक पढ़ो, बुक पढ़ना भी अच्छी बात होती है, आउटलायर करके, उसमें एक 10,000 रूल है। 10,000 क्वेश्चन जो कर लेगा ना, उसको कोई घबराहट नहीं होगी किसी भी चीज को लेकर। 10,000 इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। 10,000 घंटे कोई पढ़ लो, रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो, कैसे तुम्हारी वर्बल नहीं सुधरेगी? 10,000 घंटे तुम प्रैक्टिस करते रहो फुटबॉल की, कैसे तुम्हारा फुटबॉल का गेम नहीं सुधरेगा? 10,000 घंटे बेयर मिनिमम है। बट मैं ये नहीं बोल रहा तुम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट हाँ, अगर ये इतना प्रैक्टिस कर करके रिजल्ट्स आते हैं, तो ये एक तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हार्डवर्क के अंदर। तुम ये तीनों चीजें करने के बाद भी फेल हो सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस। फेल होना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग भी फेल हुए हैं, मैं भी फेल हुआ हूं, और मुझसे बहुत छोटे छोटे लोग, मतलब आई एम नॉट जजिंग पीपल इन द टाइम काइंड ऑफ नॉलेज दैट दे आर हैविंग, बट मैं एज की बात कर रहा हूँ। मुझसे बड़े लोग भी फेल हुए हैं, मैं अपनी एज पे भी फेल हुआ हूँ, और मेरे से छोटे जो बच्चे हैं वो भी फेल हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है मेरे से छोटे वाले बच्चे ज्यादा जल्दी सक्सेस पास हो गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भी फेल हो गए। ये तीनों चीजें करने के बाद भी सक्सेस गारंटेड नहीं है। बट हम ये क्यों बोलते हैं करने के लिए? बिकॉज सक्सेस का एक ये ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, जिसमें बहुत ज्यादा आउटकम डिलीवर हुआ है। 80-90% लोगों ने पाथ फॉलो किया है, एंड 80-90% स्टूडेंट्स को इसकी वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। तो यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। रिविजन, रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से ही अपना एक रजिस्टर बना लो, जहां पे आप एक लर्निंग लिखोगे कि ये सेट की ये लर्निंग है। इसके ट्रैप में ऐसे नहीं फंसना। अगर हर सेट की लर्निंग आपने बना ली और आपने 300 सेट सॉल्व किए, आपको लगता है 300 सेट सॉल्व करने के बाद आपके पास 300 लर्निंग्स है, और 300 लर्निंग्स है तो आपकी मिस्टेक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिकॉज आपके पास लर्निंग इतनी हो चुकी है। मिस्टेक्स नेग्लिजिबल हो जाएगी आप लोगों के पास। फिर आया मॉक्स। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके भी फेलियर हो सकता है अगर आपने टाइम बाउंडेशन में उसे सॉल्व नहीं किया। अगर आपने उसे टाइम बाउंडेशन में सॉल्व नहीं किया, सो प्लीज टेक केयर कि मॉक्स दो। मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके टॉपिक टेस्ट September 15 को ही खत्म हो जाते हैं, तो सेक्शनल टेस्ट दो, घबराओ मत। बस ये याद रखो कि मॉक्स के मार्क्स ना मॉक्स तक ही रहते हैं। मॉक्स के मार्क्स से अगर एडमिशन मिलता तो बहुत लोग कहीं और बैठे होते हैं आज की डेट पे, रादर देन जो वो बैठे हैं। ठीक है, तो मॉक्स को मॉक्स की तरह कंसिडर करो। हमेशा ध्यान रखो कि योर कर्व शुड ऑलवेज गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब सर ऐसा जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं जाएगा मॉक्स का कर्व कभी भी। मॉक्स का कर्व ऐसा जाएगा, ये मान लो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 25 मॉक है, तो पहले ऐसा जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है। बट ध्यान रखो कि ओवरऑल जो डायरेक्शन आ रही है ना, वो अपसाइड की आ रही है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करो इसके पास, इसको रिग्रेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने एरियाज के पास फ्लक्चुएट करो, बट रहो इसी लाइन के पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो मॉक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर ऑफ टाइम, टू ओवरकम योर फियर ऑफ मार्क्स, and to overcome your fear of failure. So please take into consideration that mocks are also a very critical part of of this LRDI. सेम चीजें रहेगी क्वांट्स के अंदर भी। हर चीज वही बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। तो उसमें ज्यादा डिस्कशन जो होगा ना क्वांट की वीडियो के अंदर, वो डीप डिस्कशन जो होगा वो सिलेबस को लेकर होगा, कि कैसे टैकल कर सकते हैं उसके सिलेबस को। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड फॉर द डे। व्हाई यू शुड ज्वाइन C2C मेंटर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लाइड। सर इतना ज्ञान दे दिया, अब ये भी बता दो क्यों करनी है। देखो यार, तुम्हें पता है कंसेप्ट बिल्डर्स होगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, याद रखो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें बोल देंगे बेसिक्स हैं, ये तुमने 3 सेट सेट थ्योरी का डायग्राम कर लिया ऐसा वाला, अब तुम सेट थ्योरी के चैंपियन बन जाओगे। नहीं यार, मैं पहले सबसे पहले 2 सेट कराऊंगा, फिर उसके बाद 3 सेट कराऊंगा, फिर उसके बाद 4 सेट कराऊंगा, फिर उसके बाद 5 सेट के क्वेश्चंस कराऊंगा,
और फिर उसके बाद सारे मैथ से रिलेटेड जो भी या क्वांट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं सेट थ्योरी के वो कराऊंगा। तब जाके मैं बोलूंगा हाँ अब तुम 80% चांस है कि सेट थ्योरी कर सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा 100% कर सकते हो, बिकॉज ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो सेट थ्योरी और अरेंजमेंट का मिक्स हो और तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। तो 80-90% हम आपको परफेक्ट बनाएंगे एक चीज के अंदर, 100% की गारंटी यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा मैं। ठीक है। टीचर्स हैविंग 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 99 परसेंटाइल एंड अबव। मैं खुद कैट लिख चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, मेरा एलआरडीए और क्वांट्स में दोनों में 99+ रह चुका है। उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलते हुए, बिकॉज ये एक सच है एंड काफी स्टूडेंट्स जानते भी उस चीज को। 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे 5 साल से ऊपर हो चुका है पढ़ाते हुए। इनफैक्ट हमारी जो भी फैकल्टी अच्छी फैकल्टी है जो काफी टाइम से जुड़ी हुई है हमारे साथ, जैसे मनोहर सर हैं, गौरव सर हैं, ये लोग भी 5-5 साल का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको अच्छे हाथों में ही रखा जा रहा है। हाँ, अगर मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ और मेरा मान लो कोई नीचे वन डाउन लेक्चर ले रहा है, तो आपको उस चीज में घबराने की नीड नहीं है, बिकॉज जो कोर्स का कंटेंट है वो हम लोग ही बना रहे हैं, वो लोग सिर्फ लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं। बट 90% ऑफ द क्लासेस हम लोग ही लेंगे। एक्सेस टू एलआरडीए सेक्शनल मॉक अलॉन्ग विद टॉपिक टेस्ट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता नहीं है। देखो सेक्शनल टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, टॉपिक टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे इस ई बुक्स की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। वीकली क्लासेस रिगार्डिंग डाउट्स एंड न्यू कंसेप्ट, तो हर वैसे भी हर हफ्ते हमारी क्लास होती है, क्वांट्स की दो, वर्बल की दो, एलआरडीआई की दो। तो जब जब ये क्लासेस होगी उस टाइम पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि आप अपने डाउट्स पूछो उस क्लास के अंदर, नए नए कंसेप्ट सीख के जाओ जो उस क्लास में सिखाए जा रहे हैं। आजकल बच्चे आते हैं शुरुआत में 1 घंटा तो मोटिवेशन रहता है, अगले घंटे उनको ऐसा होता है यार क्या करें, पागल हो गए हैं। साथ में क्रोम खोलते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, वो सुनने बैठ जाते हैं और रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। ठीक है, मत करो ऐसा यार अपने करियर के साथ। 180 दिन की बात है, अगर चाहते हो 180 दिन के बाद अपना लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाए नेटफ्लिक्स वगैरह का या फिर अपना यूट्यूब का, हर चीज का, तो 180 दिन सब छोड़ दो यार, सब छोड़ दो। सब छोड़ के पढ़ लो 180 दिन ढंग से। अगर 180 दिन ढंग से पढ़ लिए और 181 डे पे कमाल कर दिया तुमने, तुम्हारी लाइफ है ना बहुत अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये मैं अपने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। योर लाइफ विल गो लाइक दिस rather than going this. Okay, you guys need to take care of that. कम्युनिटी फॉर गाइडेंस एंड 24/7 डाउट सेशन। ठीक है, ये मेजरली 24/7 डाउट सेशन का, सॉल्विंग सेशन का मतलब क्या होता है कि यार एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा एनी विच वेज। अगर आपको कोई भी डाउट है आप टीम के पास पहुंचो, एक दिन में आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। 600+ एलआरडीए प्रैक्टिस सेट्स विद पास्ट ईयर सॉल्यूशन। 100 सेट रिकॉर्डेड वाले थे, ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट आप मान के चलो 100-125 सेट्स आपके पीवाईक्यूज थे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, एंड 400 सेट्स आपके जो हमने क्लास में कराए होंगे वो थे। ठीक है, याद रखो। तो ये अब ऊपर ही जाएगा कर्व यहाँ से, ये नीचे कहीं नहीं जा रहा है। रिकॉर्डिंग आपको अभी से अवेलेबल हो जाएगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे 2022 तक के। 23 के पास्ट ईयर क्वेश्चन जैसे ही रिकॉर्ड होंगे वो आपकी स्क्रीन पे वो भी आ जाएंगे। बाकी जो क्लास में जो चीजों की लर्निंग होगी वो कभी रिकॉर्डेड मटेरियल से नहीं होगी। जो डाउट आएगा वो कभी रिकॉर्डेड मटेरियल से नहीं आपका क्लैरिफाई होगा, याद रखो। और हाँ, रिकॉर्डिंग्स जो परचेज कर रहे हैं उनको अगर कोई डाउट आता है तो वो आके फोरम पे पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। So this is it what I have for LRDS. Similar video will be available for quants. I think quants का पहले ना अपलोड हो जाए, बट हाँ quants के लिए भी अपलोड होगा। कंटेंट मेजरली सेम रहेगा, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको बताई वो सेम रहेगी, बट कुछ चीजें जो चेंज होगी जो कि है कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं कैसे उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें चेंज होगी। So today I'm signing off now. I hope you have liked the video. Make sure to like this video, subscribe and share it with your friends. अगर कोई भी एडवाइस चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन अराइज कर रहा है आफ्टर रीचिंग आउट टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू गाइस कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल गेट बैक विद यू। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी टू कोड 99। ओके, बाय बाय।